So let's start with again the biggest picture, right? So what we are doing is that we are covering the basics. कोई भी इकोनॉमी में मार्केट दो प्रकार के हैं, राइट? यू हैव प्रोडक्ट मार्केट्स एंड यू हैव फैक्टर मार्केट्स. फैक्टर मार्केट्स में यू हैव मार्केट्स फॉर द इनपुट्स. हमने 4 फैक्टर्स कवर किए थे. सो यू हैव योर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. सो कैपिटल में वी डिड दैट देयर वाज फिजिकल कैपिटल एंड देयर वाज फाइनेंशियल कैपिटल. सो फैक्टर मार्केट का ही पार्ट है फाइनेंशियल मार्केट, राइट, वेयर एसेंशियली द फाइनेंशियल कैपिटल गुड्स आर ट्रेडेड. ठीक है. सो ऑल दीज आर पार्ट ऑफ द फैक्टर मार्केट, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा सिर्फ पैसे कमाने के लिए तो नहीं यूज होता है उसका, राइट? सो यू वांट मनी so that you can do something with it, and in a market or in any production economy, money is required as a capital to, like, to be used as an input for production. So the financial market is essentially the market for financial capital goods. All right, now let us define another term which is called asset. Okay, we know that asset is any possession that has value in exchange. Right? So you have physical assets. This is intuitive, and then you have so not physical exactly, you can say that you have tangible assets and you have intangible assets. ठीक है. So this is a broader category. Tangible में तुम्हारा जो physical assets हो गए, your building, your machines, right, all these things. Intangible assets में तुम्हारे हो गए the financial assets. ठीक है. So financial assets are doing what? Financial asset का physical value तो कोई है नहीं, they are papers or they are even digital, right? But they represent legal claims to some sort of payment or benefit in the future. So they are legal claims to any future benefit. That is your financial assets. That way it's intangible, right? So these are legal claims to some future benefit. ठीक है. Another term which is used, this is something that I already talked about. Issuer is the entity who has agreed to make a future payment, right? So entity who has agreed to make this future payment, जिसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे ऊपर में. And the investor is the owner of the asset. ठीक है. तो ये these are the terms that we have already clarified. Now what we have is that, as we said, the financial markets are where the financial assets are traded. Financial market में in terms of investors, यहाँ से ऐसे लिख लो, that in terms of investors you can have 2 kinds. You can have retail investors, right, and you have institutional investors. Retail investors हो गए जो individual investors हैं, right? So you must have heard and saw and read in the news that India में जो retail investors हैं उनका portion market में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, right? And that is good in some sense. That is good because it shows that there is more penetration of the financial markets among people. But it is also problematic because of several reasons. One reason I discussed the other day, that because of that
you have more, you have some sort of a deposit crunch that is happening in the bank. Secondly, the the financial market regulation in India is not that great, or is not that well established to take care of this. So then there is a lot of fraud also, there is a lot of the investors are naive, there's a lot of loss that happens. So this is something that India is dealing with right now. So um, there can be two kinds of investors. Retail investors हो गए जैसे हम तुम जाके market में invest करें, and institutional investors are then your banks, your pension houses, insurance companies. ठीक है? When an economy moves from, so when in the financial market the dominance of retail investors gives way to the dominance of institutional investors, that is called institutionalization of the financial market. ठीक है? अब किस मूव में, किस डायरेक्शन में ये मूव अच्छा है, that is something that is very contextual, depends on what the regulatory system is like, what is the financial literacy among people, what is the sort of risk taking ability in terms of wealth of the people, right? So anyways, so ये अलग discussion है. Alright, so now what we'll do is, let us talk about, these are again the terms that you will see in news and the terms that we will also use occasionally. There are few ways to classify financial markets. Alright, so there are various ways in which you can do that, do the classification. I will discuss 3 ways in detail, rest you can read in the slides. But वो 3 ways ज़्यादा ज़रूरी हैं, right? First is what is called the nature of the claim. So this is, I'm saying that this is the first basis of classification, by the nature of claim. इसके under there are 2 kinds of instruments that you can have. First is what is called a debt instrument. So a debt instrument is when the claim, or when whatever return that you are getting on that instrument. अच्छा, instrument, assets, ये सारे synonymous terms हैं. So financial instrument, financial assets, securities, all these terms are used interchangeably. So any financial product, ठीक है? तो essentially बात वही है कि किस तरीके से one entity loans out money to some other entity, the other entity returns that loans with certain interest payment. Basic funda वही है. So the product or the methodology, और क्या बोलेंगे, जो underlying तरीका है जिससे ये ट्रांसफ़र होता है, जो डिफाइन करता है कि what will be the terms of payment, what will be the terms of repayment, all this is defined by the financial asset or the financial instrument or the financial product. All these are terms used interchangeably. So a debt instrument or a debt financial asset is where your claim or your return is fixed in currency amount, INR amount. So if suppose you buy a debt instrument, what you will see is that buy मतलब तुमने खरीदा तो instrument तुम्हारा हो गया, जिससे खरीदा उसको तुमने पैसे दे दिए, ठीक है? So now this person is responsible for making payments to you, principal plus interest. तो ये किस फॉर्म में होगा? This payment will be made in fixed INR amounts. So if you have bought an instrument जिसका के 10 साल का term to maturity है, मतलब it expires after 10 years. So for each year you will get an interest payment, and at the 10th year you will get your interest plus principal back. So this is the simplest instrument that there can be. You have interest payments in every year, ईयरली इंटरेस्ट पेमेंट्स, एंड एट द एंड यू गेट योर, जैसे हमारा सिंपल जो हमारा इंटरेस्ट रेट होता है, मतलब जो हम अकाउंट किसी भी स्कूल में हम जो करते थे, ठीक है ना? तो व्हेन द इंटरेस्ट दैट यू आर सपोज टू गेट इज फिक्स्ड इन रुपी अमाउंट्स, दैट इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट.
रुपी अमाउंट्स या तुम वट एवर, सपोज यू बॉट समथिंग एट 1000 रुपीज़, सो सपोज 20% इंटरेस्ट रेट तुम्हें हर साल मिलना है, ठीक है, तो तुम्हें 200 रुपये करके हर साल मिलना है, वो फिक्स है. दीज आर डेट इंस्ट्रूमेंट्स. द अदर आर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स. इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड रेसिडुअल क्लेम्स. हमको पता है इक्विटी का मतलब ये है कि द पेमेंट्स टू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉल्ड डिविडेंड्स, राइट, एंड डिविडेंड्स आर व्हाट, दीज बेसिकली इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट डिपेंड करता है कि कितना प्रॉफिट हुआ. सो यू बाय इक्विटी इन अ पर्टिकुलर फर्म, जैसे शार्क टैंक वगैरह तुम लोग देखते होगे अगर, सो यू नो दैट इफ़ यू बाय इक्विटी इन अ पर्टिकुलर फर्म इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, देन योर पेमेंट, बाय मतलब तुमने पैसे दिए उसे उधार, वो जितना कमाएंगे उससे डिसाइड होगा कि तुम्हें कितना मिलता है. बट सिर्फ उससे डिसाइड नहीं होगा. इक्विटी पेमेंट इज मेड आफ्टर all the debt instrument owners have been paid. Okay, so equity, the dividends are so payment based on profits or earnings, right, after debt instrument payments or owners have been paid. Right, so that is why these are also called residual claims. Okay, so based on the nature of the claim के fixed payments है या फिर dependent on earning है, the market is classified into debt instruments, or a part of the market that deals with debt instruments, part that deals with equity instruments. ठीक है. The second way of classification is what is called the by maturity of claim. इसमें भी you have two kinds of market. The first one is what is called the money market. तो कल जो हम when we said that the RBI does an open market operation in the money market, मैंने कहा था ना ये, तो money market का मतलब क्या है? Money market essentially is the market that trades in short term assets, right? Short term instruments. And short term over here means that maturity is less than 1 year. So this debt instrument will mature in less than 1 year. Suppose इसका एक example है treasury bill, ठीक है. So suppose you have a treasury bill of 91 days. So then you buy the treasury bill today, you will be paid after on the 91st day. So this payment will include whatever is the term of payment. Treasury bill के केस में क्या होता है? That treasury bill is a discount instrument. That means that if a treasury bill is, उसका अगर face value बोलते हैं उसको, अगर face value उसका 100 rupees है, so today you will buy it at say 93 rupees. Okay, and on the 91st day you will get 100 rupees back. ठीक है ना. तो इसको डिस्काउंट बॉन्ड बोलते हैं कि तुमने एक डिस्काउंट पे खरीदा और तुम्हें फेस वैल्यू वापस मिल गया. सो एसेंशली योर प्रॉफिट इज द डिफरेंस. ओके, सो द इफ यू बॉट वन ट्रेजरी बिल, यू मेक 7 rupees ऑफ ईच ट्रेजरी बिल दैट यू बॉट. सो यू इट मे सीम कि ये बहुत ही छोटा सा वो है एंड यू नो इट्स इनसिग्निफिकेंट दैट वेज, बट मनी मार्केट के मेन प्लेयर्स इंडिविजुअल्स होते ही नहीं हैं. मनी मार्केट के मेन प्लेयर्स आर योर RBI, right, and your commercial banks, all these big players, especially the RBI. So money market is the basic point of contact of RBI with the banking system. ये जो day to day liquidity adjustment RBI करता है, that is via the money market. And because the volume of transaction is so huge that even these small time periods they matter a lot. ठीक है. सो ये सब यूज़ होता है वो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए.
जो हमने बाउमोल के थ्योरी में किया था, राइट. सो इवन so firms who have a huge cash lying around, for example, these firms just decide कि मतलब चलो ठीक है, अभी हमारे पास this is less than 1 year. Suppose you don't a firm knows कि मेरे को अगले 2 महीने तक तो नहीं चाहिए, और suppose 2 हफ्ते तक भी नहीं चाहिए, for 2 weeks only. So if I have 2 crore rupees lying with me, 10 crore rupees lying with me for 2 weeks, rather invest it, no, lend it to someone जिसको हो सकता है उसको immediate cash की ज़रूरत हो, right? So you lend it. Suppose a firm 1 lends it to firm 2. Firm 2 gets immediate liquidity. Firm 1 earns interest और दोनों का भला, ठीक है. So the main players in this is your the RBI and the commercial banks. Maturity का मतलब होता है एक्सपिरेशन डेट. जो अनंतता बोल रही थी वो ये है. एक्सपिरेशन डेट अगर 91 डे ट्रेजरी बिल है तो वो 91 के बाद वो इंस्ट्रूमेंट ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना. ऑलराइट. another feature of this market or the instruments that are traded in this market is that they are the least risky. एंड उसका रीज़न ये है कि इनमें प्राइस फ्लक्चुएशंस बहुत कम होता है, क्योंकि एक साल के अंदर अंदर ही मैक्सिमम इट गोज़ टू 1 year, राइट. सो because of this short time period, this short maturity period, that not much fluctuations can happen in price. The probability of price fluctuations increases with time. The longer you have to keep your money parked, the longer the higher the risk of any sort of price fluctuation, and therefore any sort of capital gain or loss, right? So in that case, these are the least risky because there is least price fluctuation, and therefore because there's least price fluctuation because of the short maturity dates. So these are least risky. Then what you have is that some examples. So some of the instruments that are traded over here, you have call market instruments. कॉल मार्केट में, कॉल मार्केट क्या है? पहले तो तुम्हारा ये हो गया मनी मार्केट. मनी मार्केट का भी एक पार्ट है कॉल मार्केट. कॉल मार्केट में 15 दिन मैक्सिमम ट्रेडिंग होता है, ठीक है. सो दीज इंस्ट्रूमेंट्स हैव सो यू हैव कॉल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, कॉल मार्केट इंस्ट्रूमेंट में भी you have call money and notice money. ये जो call money होता है, why it's called money is because these are as liquid, almost as liquid as money. Okay, so call money जो है इसमें overnight या day to day transaction, इनका maturity is less than 1 day. मतलब ये डे टू डे लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए. अगर तुम्हारे जैसे हम वो बात कर रहे थे, जैसे कि इलाहाबाद बैंक को 80,000 का लोन, मतलब दे हैड टू कॉल इट ऑफ, राइट. सो वन वे इज़ दैट दे कॉल ऑफ द लोन ऑफ समवन, द अदर वे इज़ दैट वो किसी से उधार लें, ठीक है. मान लो नहीं कोई लोन, यस, कॉल मार्केट. सो यू हैव मनी मार्केट के 2 पार्ट्स हैं. मनी मार्केट में भी कॉल मार्केट और दूसरे वाले मार्केट का कोई नाम नहीं है, ठीक है ना. सो सपोज नॉन कॉल मार्केट. कॉल मार्केट में भी यू हैव कॉल मनी एंड नोटिस मनी, राइट. सो इन मनी मार्केट दिस इज द मोस्ट लिक्विड बिकॉज इसका मेच्योरिटी 1 दिन है, राइट. सो इफ़ यू रिक्वायर मनी फॉर इमीजिएटली, तुमको आज ही अपना, भाई किसी ने शाम को 4 बजे अपना विड्रॉल किया, 5 बजे अगर तुमको बैलेंस दिखाना है कि नहीं मैं बैलेंस शीट इज़ बैलेंस्ड, सो देन यू नीड इमीजिएटली दैट 80,000 bucks. there's 80,000 bucks you get in the call money. Okay, notice money is where you have maturity of more than 1 day and less than 15 days. So this is the most liquid. Then these are traded in the call market, most liquid.
सेकेंड मोस्ट लिक्विड, ट्रेडेड इन द कॉल मार्केट. बाकी भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं बट ये सारे मनी मार्केट में ट्रेड होते हैं बिकॉज दे हैव मेच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर. ठीक है. तो कभी भी देखना आरबीआई के जब तुम वो करते हो, क्या नाम है, व्हेन यू विल रीड news or policy where it says that RBI injected liquidity, bought so many treasury bills in the money market, तो वो यही मार्केट होता है. ठीक है ना. तो मार्केट देखो ऐसा कुछ नहीं है. पहले तो ये समझ लो कि मार्केट इज़ नॉट लाइक कि बॉम्बे में कोई गली में ये मार्केट चल रहा है. यू अंडरस्टैंड दैट, राइट. सो मार्केट इज़ फ्रॉम वेयर एवर these instruments are being traded. Got it? So this money market is, what you can say is that it is the institutional source of working capital finance. वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब है? जो कि डे टू डे ऑपरेशंस के लिए चाहिए. ठीक है. लॉन्गर टर्म फाइनेंस क्या होता है? जो हमको लंबे इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए. तो जो लंबे इन्वेस्टमेंट के लिए, सपोज तुम्हें मार्केट से पैसा उठाना है, if you're a firm, you want investment for a project that is spread over 10 years, then this is not the market you go to, right? This is the market that you go to जब तुमको कोई, मान लो कि अपने किसी सप्लायर को immediate payment करना है. Okay, all right. So this is your money market. The other market is what is called the capital market. So capital market where instruments with maturity more than 1 year. ठीक है. तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म मेच्योरिटी वाले हैं, एटलीस्ट 1 साल से तो ज़्यादा ही है. अगेन द मेन प्लेयर्स ओवर हियर आर, you will have all kinds of players here, but the main participants will be your financial intermediaries, banks and all that. ठीक है ना. उसके अलावा what else? So इसका जो aim है, so for capital market the aim is to finance fixed investments, right? Long term fixed investments. इसमें you will have higher risk because the price fluctuations will be high due to longer maturity. Right? And the equities, the stocks that you trade, because they don't have an expiration date, technically they are part of the capital market. तो जो तुम्हारा स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में सारे ट्रेड्स होते हैं, दैट इज़ योर कैपिटल मार्केट. बिकॉज एनीथिंग दैट यू इन्वेस्ट, एक तो ऑफकोर्स यू कैन ऑफलोड द इंस्ट्रूमेंट. किसी इंस्ट्रूमेंट का खरीदने का मतलब ये नहीं है कि तुम उसे नहीं बेच सकते. तुम शेयर्स खरीदते हो, आज हो सकता है कल बेच दो, राइट. बट द पॉइंट इज दैट द शेयर डज नॉट एक्सपायर. If the share is a true extreme example, just think of suppose there are government securities that have a term to maturity of 10 years. So they will expire after 10 years. 2018 में तुमने खरीदा, 2028 में वो expire होने वाला है. It will keep on paying you interest rate for 10 years and on the 10th year it will pay you interest plus your principal. ठीक है. So it may be the case that you buy it and sell it within 6 months, but the instrument does not expire. ठीक है. So that instrument is traded in the capital market. If the instrument itself expires like a treasury bill, तो उसको money market बोलते हैं. ठीक है. This distinction is clear? So the examples over here is your stocks, you have your corporate bonds, you have government securities, G-Secs बोलते हैं उनको, जो loans हुआ तुम्हारा, consumer and commercial loans, all these things. तो जो बैंक जब लोन क्या नाम है इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, so that means that
जैसे स्टूडेंट लोन लोगे तुम अगर, तो तुम सालों साल चुकाते रहोगे, बिकॉज दैट इज़ अ कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, ऑल राइट. Then the third one, the only one that we will cover is categorized by the seasoning. Seasoning का मतलब मैं बता रही हूँ, seasoning of the claim. इसमें there are two kinds of market again. First is the primary market. Primary market is the market where newly issued, it's also called the new issues market. Suppose there's a firm, right, who right now was just owned by its owners, and the firm decides to go public, है ना. तो उसको क्या बोलते हैं, जब when a firm decides to go public, what is it called? जब वो मार्केट में जाता है उसको क्या बोलते हैं, फर्म का क्या आ जाता है, आता है ना, जोमेटो का IPO आने वाला है, राइट. IPO इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, एंड ऑल राइट. सो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स आर ट्रेडेड इन द प्राइमरी मार्केट. सो दीज आर पब्लिक ऑफ, ये सारे क्या है, शेयर्स ही हैं, मतलब दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर बीइंग इशूड बाय दिस फर्म who wants to raise funding from people outside the owners. 2 लोगों ने 4 लोगों ने मिलके फर्म खोला, बट उनको अब पैसा चाहिए, राइट. सो दे हैव नाउ क्रिएटेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ देयर ओन, दे हैव इशूड इंस्ट्रूमेंट्स. दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉल्ड द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. इनिशियल मतलब फर्स्ट टाइम वो ऑफर हो रहा है. तो जो लोग फर्स्ट टाइम ये खरीदेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम ये मतलब दीज विल बी मोर इंस्टीट्यूशनलाइज प्लेयर्स. आजकल तो इट्स ऑल्सो ओपन टू द पब्लिक, तो वैसा हो जाता है. सो देन इट डिपेंड्स ऑन दी रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म. ठीक है ना. तो बिना उस कॉम्प्लिकेशन में जाए हुए, द आइडिया इज़ दैट दिस इज़ द मार्केट वेयर इफ़ अ फर्म, अब जैसे नाइका हुआ या तुम्हारा पेटीएम हुआ, ऑल दीज आर वेरी वेल नोन नेम्स बिकॉज यू वर यूजिंग देम इन योर डेली लाइफ्स. बट सिर्फ यही फर्म्स तो नहीं है. मोस्ट ऑफ द फर्म्स व्हेन दे रिलीज देयर IPOs, वो सब न्यूज़ में भी नहीं आता है, राइट. सो IPO में इस प्राइमरी मार्केट में मेन डीलर्स होते हैं तुम्हारे वही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिनके पास ऑफकोर्स इतना बैकिंग हो कि वो रिस्क ले सकें, लॉस भी उठा सकें. ठीक है. तो बहुत ही कम बार ऐसा होगा दैट यू विल गेट एनी IPO विल मेक न्यूज़. ठीक है. So primary market is where the newly issued instruments are traded. ठीक है. So this is a lot of times your firm will go through an investment banking और वो सारी चीज़ें हैं उसमें, but anyways not important for this course. So most of the time these funds will be raised for long term capital requirement. So these will be your initial public offerings. Right. And the other is your what is called the secondary market. ठीक है. तो ये सारे जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, द स्टॉक मार्केट, that is the secondary market. All right. So here the what do you say, the previously issued securities are traded. जो एक बार जैसे किसी नाइका का IPO आ गया, अब जैसे तुमने उसका IPO पहले खरीदा था बट अब तुम्हें पसंद नहीं आया, सो यू सोल्ड इट टू समवन. सो दैट इज when it's happening in the secondary market. So whoever is buying from you is not initially buying from is not the initial buyer. It did not buy it from the firm. It is only buying it from someone else. So जो secondary market का dealing होता है, इसमें जो पैसों का आदान प्रदान होता है, like suppose you bought it, right, and now you sold it to me. So I am paying you now, but I'm not paying to the firm. So whatever happens in the stock market is not funding or is not
help the original firm gather any resources. ठीक है, मतलब कुछ एडिशनल रिसोर्स उसको नहीं मिल रहा है, तुमने तो मेरे को पैसे दिए, ठीक है ना. तो स्टिल इसके भी अपने फ़ायदे हैं. सेकेंडरी मार्केट इज़ सॉर्ट ऑफ it has more of a signaling role than a role which is very important in terms of financing a firm. Even though stock markets are the ones who are in the news the most, their role in funding for any particular firm or a bank is actually very small, क्योंकि हमको जनता को यही दिखता है, इसलिए ये न्यूज़ में ज़्यादा रहता है. बट दिस इज़ नॉट द मेजर सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर एनी कंपनी और फर्म, राइट. सो वी नो मेजर जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया में, द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, राइट, योर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये सारे. देयर आर ऑल्सो अ लॉट ऑफ रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस, या. इसके अलावा देर आर 2 more categories that I will just mention briefly. There is a category of classification, or the classification of the financial markets by the timing of delivery. इसमें you must have come across these terms. So you have your cash or spot market, and the other one you have what is called the derivative market. इसका समझना इतना ज़रूरी नहीं है for this course. What you just need to understand is that whatever instruments that we studied till now, जैसे तुमने एक स्टॉक बेचा या एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदा या कोई ट्रेजरी बिल या कुछ किया, द सेटलमेंट दैट इज़ हैपनिंग इज़ आज का आज. पहले वो T+1, T+2, T+3 ऐसे होता था, बट विद यू मस्ट हैव सीन दैट इवन सेबी हैज़ कम विद रिवाइज्ड गाइडलाइंस के नहीं अब T+2 नहीं, फिर T+1 ही होगा, फिर सेम डे सेटलमेंट्स भी हैं. बट द पॉइंट इज़ दैट the settlement is so close to the actual date of deal is that it does not create a change in terms of pricing of the instrument. But derivative is where you make a deal today and you decide to, there can be various options, you make a deal today कि हम future price में suppose एक साल बाद जो price रहेगा उसमें हम we will exchange we will exchange the money and asset. Or you can make a deal like that whatever is the price today, we will make an exchange at after 1 year, but the price will exist what it exists today, right? So these are various kinds of instruments. They are called derivative because they are not delivered on the spot and they are derived from an underlying asset. So the main difference that you need to understand that all the instruments that we will also study for in the term structure and most of the instruments that we talk about when we think of financial markets, these are cash or on the spot. These are traded in the spot market. आज के आज हाथ के हाथ ही उनका डील हो जाता है. There is no agreement about any future date. All right. Then the final one is based on the organizational structure. कि किस टाइप के डील्स होते हैं, मतलब how do buyers and sellers interact. So there is something where it is an auction market, there is over the counter sort of market, and there is intermediated market. तो ये सब में जाने की ज़रूरत नहीं है, I'm just telling you for the sake of completion. Clear है? Cool.